Hello students, once again you are most welcome here. This is Devesh Singh. Before starting the last page of this story, I remind you the last story in a brief that finally the thief started to realize about his theft and uh, he left his Lucknow Express and now he came back to Bazaar, and at that time it was raining. After sitting a long time, finally he decided to return back at Anil's home. Now let's see here. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. As I have told you that he was sitting in the open field and it was raining, so he was wet. So he came back to the bazaar and he started to search a shelter for him, and he found a clock tower. There he stayed for some minute, and now the clock showed midnight. When he noticed the clock, he he observed that the clock was showing midnight time. I felt for the notes. Then he remembered. Then he remembered about the notes which was stolen by him, and the note which belongs to Anil. He found that they were damp from the rain, and he noticed that the notes were damp, wet ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द रेन. मीन्स जो पैसे वो अपने पैजामे में लपेट के रखा हुआ था वो बारिश में भीग करके गीले हो गए थे. Anil's money. This was Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. यहाँ पे जो थिप है वो सोच रहा है कि डेफिनेटली इन द मॉर्निंग टाइम अनिल अनिल would give him 2 or 3 rupees to see movies, as he was a very enjoyable person and he believed in entertainment. But now I had it all. लेकिन चोर सोच रहा है कि 2 या 3 रुपये उससे देता, लेकिन उसके पास तो वो पूरे पैसे थे. I couldn't cook his meals, run to the bazaar to learn to write whole sentences anymore. And now he started to think about the time when he has spent at Anil's home. What was his task? To cook food, to run to bazaar, to uh, bring the kitchen's things, and also he taught him how to read and write. But he realized that now this work will be ended for him. There will be no work for him and he would not be able to learn how to read and write. I had forgotten about them in the excitement of the theft, and at that time he he had forgotten he had forgotten about them, means about all the work, all the task, all the help provided by Anil to him in the excitement of the theft when he stolen the money and whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. And now a very big things here happening. He realized that if he become educated one day, definitely he earn lot of money. But in the greed of some money, he took a very bad step. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. Now the thief thought. Now the thief thought that uh, stealing stealing is a very easy task, but and sometimes to be caught means पकड़े जाना भी एक ये भी easy है, but to be
a really big man, a clever and respected man was something else. But it is greater. It is greater to become a clever man, a respected man, a big man. It requires a very great requirement. He realized all these things. I should go back to Anil. I told myself, if only to learn to read and write. And finally, he realized that now he must return to Anil. He told himself, as he will be able to learn how to read and write. I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. And at once he decided to return, and he also returned Anil's home. He was extremely nervous at that time, as he uh, realized himself very difficult to return the money, as it was very easy to steal him, but returning money was a very big task, seemed to him. And here I opened the door quickly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Finally, he was standing just in the doorway of Anil's house, and he opened the door very quickly. He was standing in a clouded moonlight. The moonlight was spreaded in the room. Anil was still asleep. अभी भी अनिल सोया था. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. और फिर उसके बेड पे जहाँ वो सोया था उसके सर की तरफ हो गया. अभी भी उस अनिल सोया था, उसके सर के पास गया और नोट्स को जो है अपने हाथ में ले लिया. मीन्स उस पैजामे में वो रखा था वहाँ से निकाल करके अब पैसे को अब अपने हाथ में वो ले लिया. Okay, I remained still for a no. I felt his breath on my hand. और अचानक उसी समय उसे अपने हैंड पर ब्रीथ उसकी महसूस हुआ. मीन्स अनिल का ब्रीथ अचानक उसे अपने हैंड पर महसूस हुआ. अब आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट. तो कुछ एक मिनट के लिए वहीं पर ठहर गया, बिल्कुल सहम गया. उसे लगा कहीं जगह तो नहीं है. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस. और फिर जब उसको अपने गद्दे का किनारा जब मिल गया तो स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स. धीरे से नोट्स को उसके अंदर स्लिप करके डाल दिया. I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. अब जब डाल दिया फिर जाके वो चुपचाप बालकनी में सो जाता है. और पूरी रात तो भागा था, इसलिए अब वो सुबह देर तक सोया हुआ है. लेकिन जब उठा तो पाया कि अनिल जो है अभी भी उसके जगने से पहले उठ चुका था और चाय ऑलरेडी बना लिया था. He stretched out his hands towards me. अनिल उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाया. देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर. जब हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो उसमें अनिल के हाथ में 50 रुपीज़ का एक नोट था. माई हार्ट सैंक. 50 रुपीज़ को नोट को देखते ही अब इसका जो हार्ट था बिल्कुल सैंक हो गया. ये डर गया, सहम गया. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. और इसको तो लगा कि अब ये पकड़ा गया, इसकी चोरी पकड़ी गई. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेशन जो थी उस समय किया था ऐसा कुछ नहीं था. और अचानक अनिल ने कहा कि कल उसे कुछ पैसे मिले थे और अब वो तुम्हें रेगुलरली
पेमेंट करेगा नियमित समय पर और वो उसे पैसा देगा। ऐसा सारी बात अनिल ने थीफ को बताया। माई स्पिरिट रोज। ये सब सुनने के बाद द थीफ रियलाइज अ लॉट ऑफ कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, थोड़ी सी उसी संतुष्टि मिली, उसका डर कम हुआ। बट वेन आई टुक द नोट आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। लेकिन जैसे नोट को अपने हाथ में लिया, नोट अभी भी गीला था क्योंकि रात को बारिश में पैसा भीग गया था। अब ये देख करके थीफ हरी सिंह फिर से एक बार चिंतित हो गया, काफ़ी अपसेट हो गया कि उस समय जब अनिल पैसा लाया था तो पैसे तो बिल्कुल न्यू करेंसी में थे, लेकिन ना पैसे गीले कैसे हैं। अनिल भी इस चीज़ को ज़रूर सोचा होगा। Today we will start writing sentences, he said. अभी Thief was thinking a lot about the opinion of the man Anil. Meanwhile, Anil said, today they will start writing sentences. सेंटेंस लिखना अब उसको सिखाएगा, ऐसा अनिल ने उसको बताया। He knew, वह जानता था। कौन जानता था? अनिल। अर्थात अब हरी सिंह ने तो अनिल के माइंड को रीड कर लिया था कि उसके चोरी के बारे में उसे पता चल गया है, उसे जान गया है। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। बट अनिल वाज आल्सो अ वेरी trustful man. He never showed slightest surprise about it. He never told him about this matter. I smiled at Anil, and so the thief Hari Singh smiled at Anil. ये अनिल के ऊपर मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने उस अपीलिंग वे में अब उसके ऊपर मुस्कुराया। काफ़ी उस मीन्स ही वॉज ट्राइंग टू अट्रैक्ट अनिल दैट मे बी इफ ही knows about this theft, so he will ignore it, and he was trying to attract Anil towards him as he was trying to say sorry. So such type of condition was creating at that time by the thief only to attract the views of Anil. एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ। और जो स्माइल उस समय थिफ ने दिखाया, वो स्माइल जो था वो अपील करने का नहीं था। इट केम डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट ऑफ द थिफ हरी सिंह, एज ही वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाई अनिल। So he showed this appealing smile for him without any effort, और विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी एक्स्ट्रा एडवांटेज के, दिस टाइम ही शोड दिस अपीलिंग स्माइल टू अनिल। एंड वी कैन आल्सो से दैट फाइनली the thief also realized what is wrong, and so he chose a proper way for him, as he understood the reality of education in his life. So he came back there to read and write. So students, a very interesting story, the thief's story has been finally completed. Now you will see the video, you will clear your doubts. That's okay. Goodbye everyone.